Hello everyone, welcome to Computer Knowledge. आज आम देखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ग्रुप इन टैली टैली रे समुदाय केतोटी अकाउंट रही चलंतु आरंभ करिबा. In Tally, the total accounts are classified into 28 groups. Such 28 groups are further classified into two groups types. Those are primary groups and secondary groups. Tally रे समुदाय 28 ग्रुप रही 28 ग्रुप को दुई भाग विभक्त कराई. प्राइमरी ग्रुप्स सेकेंडरी ग्रुप्स. प्राइमरी ग्रुप्स 15 रही बेले सेकेंडरी ग्रुप्स 13 रही. The 15 primary groups are further classified into two groups. Those are balance sheet groups and profit loss groups, whereas the 9 groups are used to prepare the balance sheet and 6 groups are used to prepare the profit and loss groups. यार अर्थ 15 प्राइमरी ग्रुप्स को दुई भाग विभक्त कराई. गोटे हूँ बैलेंस शीट ग्रुप्स आ गोटे हूँ प्रॉफिट लॉस ग्रुप्स. बैलेंस शीट ग्रुप्स को 9 विभक्त कराई और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को 6 भाग विभक्त कराई. प्रॉफिट लॉस अकाउंट को 6 भाग विभक्त कराई. तापरे देखिबा द बैलेंस शीट ग्रुप्स आर कैपिटल इन नेचर एंड द प्रॉफिट एंड लॉस ग्रुप्स आर रेवेन्यू इन नेचर. बैलेंस शीट ग्रुप्स हमर केतिकी स्टॉक अमाउंट रही सेटा डिस्प्ले करे और प्रॉफिट लॉस ग्रुप्स तम कंपनी केतिकी प्रॉफिट हेछि केतिकी लॉस हेछि सेटा डिस्प्ले करे. तापरे आपन जदि ऊपर जति कहल बुझिया कंफ्यूज होछन त सिंपल डायग्राम टाइम तळे देछि ताकू बुझि परिबे. अकाउंटिंग ग्रुप को 28 रही. अकाउंटिंग ग्रुप्स 28 रही. ताको दुई भाग विभक्त कराई. गोटे हूँ प्राइमरी ग्रुप आ गोटे हूँ सेकेंडरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप 15 रही. सेकेंडरी ग्रुप 13 रही. प्राइमरी ग्रुप को पुणी दुई भाग विभक्त कराई. बैलेंस शीट ग्रुप बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट रही 9टी प्रॉफिट लॉस अकाउंट रही 6टी. तापरे देखिया बैलेंस शीट ग्रुप्स रे केउ सब अकाउंट्स रही 9टी अकाउंट्स कौन कौन कैपिटल अकाउंट करेंट लिएबिलिटी लोन्स एंड लिएबिलिटी फिक्स्ड एसेट्स. तापरे करेंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट ब्रांच एंड डिविजन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बा MISS एक्सपेंसेस सस्पेंस अकाउंट. तापरे देखिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रुप को 6 विभक्त कराई. सेगुरा कौन कौन ना परचेस अकाउंट सेल्स अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डायरेक्ट इनकम अकाउंट एंड इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट. आमे देखिले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ग्रुप रे समुदाय 6टी अकाउंट रही. ता मध्यरु प्रथमटी होची परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट काहा कहै जाय. व्हाट इज परचेस अकाउंट? All type of purchase which are made by the company on regular basis, generally which are revenue in nature, is called purchase account. Like local purchase, site purchase, import purchase, etc. comes under the purchase account. यार अर्थ होची जेतेबेले आमे कोनोसी जिंस सेल उद्देश्य रे किनि थाउ ताहाको परचेस कह जाय. फॉर एग्जांपल तमर गोटे ग्रोसरी स्टोर अच्छे सेथरे ग्रोसरी आइटम सब चीनी आटा सुजी जहा भी सब किनिटा ग्रोसरी आइटम किनलो सेटा परचेस कह जाय. किंबा तमर गोटे मेडिसिन स्टोर अच्छे से मेडिसिन स्टोर रे जते सब मेडिसिन किनलो सेटा परचेस कह जाय. किंतु किछिटा स्तर रे परचेस कला रे गोटे ओनर पई परचेस होई पारे किंतु अन्य एक ओनर पई सेटा परचेस होई न थाए. फॉर एग्जांपल तुम मेडिसिन स्टोर रे मेडिसिन किनलो सेटा परचेस होई पारे किंतु से मेडिसिन डिटेल्स को कैलकुलेट करिया पई अकाउंटिंग करिया पई तुम गोटे सिस्टम किनलो से सिस्टम जो किनलो जो कंप्यूटरटा किनलो सेटा परचेस होई न थाए. कारण से सिस्टमटा तुम मेडिसिन को अकाउंटिंग केते मेडिसिन आले से डिटेल्स को अकाउंटिंग करिया पई किनलो ना कि तुम सेल्स करिया पई किनलो सेते पई से कंप्यूटरटा परचेस रे जाई न थाए. तापरे देखिबा purchase of raw material are debited to the debit side of profit and loss account. It is used to find out the gross profit or gross loss of a business for a particular period. यार अर्थ होची जेतला हमें परचेस करथै या सब डेबिट साइड रे शो करथै. तापरे देखिबा व्हाट इज सेल्स अकाउंट. Generally, the sales of finished goods which are manufactured or purchased for a sales are comes under the sales account. Sales account is a revenue account. All type of sales like local sales, expo sales, side sales, etc. comes under sales account. यार अर्थ होची जेतेबेले कोनोसी द्रव्य परचेस कर साइला पर से द्रव्य कस्टमर को सेल करथौ
ताहाकू सेल्स अकाउंट कह जाए। तापर देखिबा The sales account is credited to the credit side of trending account. It is used to find out the gross profit, gross loss of a business for a particular period. यार अर्थ होउछि जेतबेले आमे कोनोसी द्रव्य सेल करिथाउ ताहा प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे सब क्रेडिट साइड रे शो करथे। यह बिजनेस रे केते की ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस होइछि यह देखाइ थाए। तापरे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट? दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड फॉर द for the production of goods is called direct expenses. Generally the expenses inside the factory are called direct expenses. यार अर्थ होउछि बिजनेस रे हेउथवा सीधा सड़क खर्च को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह जाए। फॉर एग्जांपल तुम कंपनी रे काम करथवा कर्मचारी को सैलरी देबा एवं सही फैक्ट्री रे रेंट पे करबा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह जाए। तापर देखिबा direct expenses is used to find out the gross profit gross loss. It is debited to the debit side of trending account. Expenses like factory rent, factory lighting, coal and gas, excise duty, etc. are comes under the direct expenses. तापर देखिए what is indirect expenses account? Those expenses which are indirectly associated for the production of goods is called indirect expenses. यार अर्थ होउछि बिजनेस रे हेउथिबा इनडायरेक्ट खर्च को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह जाए। फॉर एग्जांपल तुम कंपनी रे कोनोसी प्रोडक्ट को पब्लिश करिबा पई जे एडवर्टाइजमेंट करथो ताहाकू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह जाए। तापरे indirect expenses is debited to the debit side of profit and loss account. Office of advertisement overhead, selling and distribution overhead, etc. comes under the indirect expenses. तापरे what is direct income? Those income which are main source of the business. It means the income which comes from primary activity of an organization is called direct income. जेतबेले आमे द्रव्य बा गुड्स सेल करथाउ सेथिर जे रेवेन्यू होइथाय ताहाको डायरेक्ट इनकम कह जाए। फॉर एग्जांपल तमर गोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अछि तमे कंपनी सेल कलो कंपनी गोटे अछि तादर कंपनी तमे सेल कलो सेथिर जे रेवेन्यू होइथाय ताहाको डायरेक्ट इनकम कह जाए। तापरे देखियो व्हाट इज इनडायरेक्ट इनकम? Those income which generate other than the main source is called indirect incomes. The extraordinary income from the ancillary activities of an organization is called indirect income. Example: commission received, interest received, discount received, rent subletting, etc. are comes under the indirect income. यार अर्थ होउछि बिजनेस रे हेउथिबा डायरेक्ट इनकम को छाडल अन्य जे कोनोसी जेतिक इनकम रहिला ताको इनडायरेक्ट इनकम कह जाए। फॉर एग्जांपल जेतबेले तमे गुड्स सेल करि थाओ सेति पई जे कमिशन दिया जाए ताहाको इनडायरेक्ट इनकम कह जाए। कि सरिला प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे जेतिक 6टी अकाउंट्स रहिछि परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, डायरेक्ट इनकम अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट ए 6टी को आमे पूरा भला भाबरे बुझि नेले। तापर नेक्स्ट वीडियो रे आमे बैलेंस शीट को भला भाबरे बुझि। ये सबरो नोट्स आपण मोर इंस्टाग्राम चैनल रे फ्री रे पाई परिबे। मो इंस्टाग्राम चैनल को जोआ पई मो यूट्यूब रो बायो रे इंस्टाग्राम चैनल रो लिंक देछि सेठी क्लिक करके सब नोट्स आपण फ्री रे पाई परिबे। ये वीडियो टी जदि आपण भल लागिथो त लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय